Good afternoon, everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to the Pancakes and Sensex Expiry podcast. And my name is Avinash, and I'll be your host for the today's session. And for the conducting today's our expiry session, we will have our none other than Sensex King, Mr. Madhur Mundada. Right. So Madhur sir will be joining us like in couple of minutes. So before he join us, we'll quickly just check the indices. मार्केट की अगर हम बात ही करें, निफ्टी इज ट्रेडिंग लाइक फ्लैटिश टू नेगेटिव राइट नाउ. अगर हम आखिरी कुछ घंटे की बात करें, राइट, हम मार्केट ओपनिंग के बाद से ही इट्स ऑलमोस्ट अ फ्लैटिश ओपनिंग ओनली. राइट, तो एक पॉजिटिव नोट पे मार्केट ओपन हुआ था. राइट, उसके बाद में आसपास में वहीं पे एक हाई मार के अभी थोड़ा सा एक नीचे से हमें सेल देखने मिला है. इट्स नियरली 40% 40 पॉइंट्स डाउन साइड. तो एक फ्लैटिश टू नेगेटिव ही कहेंगे, कंसीडरिंग कि मार्केट में हर थोड़े समय में स्टांस चेंज हो रहा है. राइट, so this is quite normal for us nowadays. We can definitely see market opening एक positive पे रहता है, flatish to positive, and suddenly after couple of hours उसमें थोड़ा सा हमें एक गिरावट देखने मिलता है, and it still continues for the rest of the day. Right, so यही रहा है पूरे मार्केट में ऑल इन ऑल काफी कुछ दिनों से. एंड आज की बात करें तो आज भी यही है. Coming back to Sensex, Sensex is nearly 131 points downside, right? And इसमें हमें मोस्टली तो the trade I can see it's still trading sideways as of now from last couple of minutes. But let's see how it goes for the expiry session. हमें किस डायरेक्शन में प्ले करना है, क्योंकि अगर हम लास्ट 15 मिनट्स में इंट्राडे चार्ट पे अगर देखें, सो ऑल इन ऑल एक पूरा साइडवेज पे ही है. राइट, एक 70 से 80 पॉइंट्स के रेंज में ही एक मूव हो रहा है. राइट, सो लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर अस. क्या हम नेकेड साइड में प्ले करने वाले हैं, राइट, या कोई स्ट्रेटेजी में? मधु सर विल गाइड अस इन द सेशन हाउ एग्जैक्टली वी विल बी गोइंग टू डू इन दिस सेशन. सारे बीटीएसटी आइडियाज भी हमें देखने मिले ऑन द टर्मिनल. राइट, यू कैन डेफिनेटली फोकस ऑन आईओसी, यू कैन फोकस ऑन मासडॉक. राइट, ये सारे स्टॉक्स में आप फोकस कर सकते हो फॉर द बीटीएसटी पार्ट. बट फॉर having a quick overview about these stocks, Madhur sir will be going to walk through around these stocks and around the market. Then definitely we will share the BTST as well, or more or less. So yes, Madhur sir, let me know if I'm audible to you. Yes, Avinash. Great, Madhur sir. Let me know when we can start the session. Yeah, in next 1 to 2 minutes. Great. सो गाइस, स्टॉक स्पेसिफिक भी बात करें तो स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत आज हमने थोड़ा सा एक देखने मिला है. राइट, तो लाइक पीएसयू बैंक्स में अगर बात करें तो थोड़ा बहुत हमें इसमें एक मोमेंटम देखने मिला है. राइट, थोड़ा पॉजिटिव है कुछ कुछ स्टॉक्स में. सो देखा जाए तो स्टील स्टॉक्स भी, टाटा स्टील भी, इट वाज नियरली 1% अपसाइड. राइट, सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो कुछ कुछ स्टॉक्स में आज मोमेंटम था, इवन दो मार्केट इज ट्रेडिंग नेगेटिव टू फ्लैटिश. कुछ सारे स्टॉक्स में मोमेंटम है. And talking about the most frequent asked question on Zomato, Zomato is nearly 2% upside today. So देखा जाए तो स्टॉक वाइज में थोड़ा बहुत एक्शन है आज. राइट, रेलवे स्टॉक्स में भी जैसे कि आईआरएफसी अगर बात करें तो उसमें भी ऑलमोस्ट 3% का अपसाइड है. So let's see how it goes for us today, and quickly hand over the session to Madhur sir. Madhur sir, your camera is off. You can definitely start the session when you are good to go. Yes, Avinash. So very good afternoon, everyone. Welcome back to the Sensex expiry play. Right. So looks like a muted expiry because the momentum is missing. Other side, we have opened the slightly gap down, and from there seen some recovery. But from last 1 to 2 hours, index is moving in the range of almost nearly 50-60 point, and that's why the momentum is missing. Other side, though some action seen in the broader market as Nifty mid cap and small cap index seen some sharp recovery from its lower in the intraday from intraday perspective. So some good stock momentum action is there. Look at the Indigo, PFC, HPCL, BPCL, IOC. Quite a good action across the broader market today after so long time, and that's a good sign for the bulls. Right now, talking about the Nifty's level, look at the daily chart again. The see looking at the broader time frame, looking at the chart, still there is a view the clear is a bearish because
Nifty is forming a lower top, lower bottom on a daily time frame from last 4 trading session, and Nifty can go towards 21,800 and then 21,600 zone. So till Nifty is not able to surpass is a key level. Again, the view is clearly that is a bearish view. Uh, though we have seen some good action from the lower zone today, but the sale on bounce is may continue in the market till Nifty not able to surpass its crucial resistance zone. So 21,800 is a immediate support for the Nifty, then 21,600 zone, while the 22,200 is the immediate hurdle, and then 22,400. So these are the levels for the Nifty on the daily frame, forming a lower top, lower bottom from last 2 to 3 trading session, and the view is bearish, right? May for the intraday perspective, the bias is slightly positive, but since morning we are trying to buy the put on the every bounce came in the Nifty. Even about the Sensex as well. I tried to give the 3-4 trades in the Sensex on a put side, but just we captured, we're able to capture just 10 to 15 at 20 points in the Sensex. So the momentum is not there for the what we need for the option buying. Now look at the Bank Nifty. Again, the Bank Nifty today in morning made a low around 47,900, and it's very nice to see that the Bank Nifty is able to hold that low and trading near its day high. Sorry, the day high is almost 100 point up, but trading its higher zone. And the good part that the Bank Nifty is able to, because of some private banks and some PSU bank like the SBI. SBI is up by nearly 1%, and is trading flat, right? So the Bank Nifty is able to hold the gains as of now. Is up by nearly 0.3%. Nifty is slightly down by 0.12%. So Bank Nifty, the immediate support is seen at 47,850. That's a crucial support for the Bank Nifty. Is if Bank Nifty uh, वो support अगर breach होता है Bank Nifty में, then Bank Nifty में एक major fall आ सकता है. But as of now, till the Bank Nifty is hold 47,850 zone, we can see the momentum in the Bank Nifty towards 48,500 and 48,750. Again, looking at the bigger time frame, the view is still the bearish. Sale on bounce may continue the market for the Bank Nifty as well. So 47,850 is the immediate support of the Bank Nifty, while the hurdles at the 48,500 zone. Now talking about the Sensex, right now trading at the 73,000 level, and since last 2 to 3 hours, it's trading in a very narrow range of 150 200 point. Right, look at the chart as well. This is Sensex daily chart, and we'll go with the 15-minute chart. There are swings, but the range is very narrow. We've seen some good recoveries since morning. It made a low around 72,633, and then we made a high around 73,000, right? So 400 point recovery in the Sensex from the lower levels. But again, the momentum is missing either side. It's very difficult to initiate the trade for the option buy. Though I'm tracking call and put, 73,000 call and put I'm tracking. The call is trading around 18 and the put is trading around 36. The combined premium of those call and put uh, before half an hour is around 80 level. Now the combined premium में अगर मैं बात करूँ तो 35 and 18 तो approx 53 के आसपास combined premium है. So again the decay is going on in the premiums. So as of now कोई setup यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, right? यहाँ पर कोई setup होता है तो we'll definitely update on the same. But some stock specific action is there. As I said, broader market में आज काफी अच्छा momentum है. Even Indigo पे हमने CDI call initiate किया है. CDI stands for Conviction Delivery Idea. So one can go with the Indigo. Even HPCL काफी अच्छा लग रहा है. काफी अच्छा recovery देखने मिला है across all the OMCs. HPCL, BPCL, IOC. So this is a chart of HPCL.
चैनल का ब्रेकआउट के वर्ज पे है. ऑलरेडी स्टॉक इज अप बाय 5.76%. So one can focus on the HPCL, BPCL. Even Indigo looks very nice. Yes, Avinash. Now we can take some queries. ग्रेट. सो जैसे कि गाइस हमें बता दिया है मधु सर ने कि मार्केट में इतना कोई मोमेंटम नहीं है, राइट? सो वी आर स्टिल ट्रैकिंग द टू स्ट्राइक्स, दैट इज Sensex 73,000 कॉल एंड 73,000 पुट. लेट्स होप अगर कोई नेकेड ऑप्शन हमें नहीं मिलता, विल डेफिनेटली ट्राई टू इनिशिएट सम स्ट्रेटजी, राइट? एंड विल टेक सम स्टॉक क्वेरीज. सो मधुर सर, सिंस जैसा हम देख पा रहे हैं आज मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने मिला, राइट? तो आपके नजर में कोई बीटीएसटी के लिए भी कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है? BTST के we are trying to find Avinash. जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो मैं वैसे शेयर करूंगा. Great. So we'll quickly move to the staking stock queries only. So Grasim futures sell view of for 2420. Graphing future. Sell 2420. I'm not getting the query. मैं व्यू शेयर कर देता हूँ बट मैं क्वेरी समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या बोला उन्होंने. लुकिंग एट द चार्ट, यहाँ पर थोड़ा सा जो इसका कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन हो रहा था, थोड़ा वहां पॉज हुआ है. सपोर्ट से एक बाइंग देखने मिली है, राइट? इट हैज अ स्ट्रांग सपोर्ट अराउंड 2300 और वहां से एक 100 पॉइंट का अप मूव लास्ट 2 दिन में देखने मिला है. एंड फॉर्मिंग हाइट ऑफ हायर बॉटम. डेली में निगेशन भी हुआ है. स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है ऊपर के लेवल में. सो अगर आपने सेल किया है तो एक बार आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें इससे, बिकॉज मोमेंटम देखने मिला है 2 दिनों से लास्ट और निगेशन भी हुआ है. तो स्टॉक कैन हिट टुवर्ड्स 2420 एंड 2440 लेवल. तो बेसिकली अगर शॉर्ट किया तो आप इसे एक बार के लिए एग्जिट कर सकते हो. Great. What is the view on IRFC? जैसे कि मैंने ऑलरेडी कह दिया, IRFC it was nearly 3% upside today, right? अभी भी 2% के ऊपर ही है. What is the view on it, मधु सर? राइट. एक्चुअली कल IRFC को और IRCTC को दोनों को नवरत्न स्टेटस मिला है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दैट्स व्हाई द स्टॉक इज अप बाय नियरली 3%. लुकिंग एट द चार्ट, अभी भी कोई खास यहाँ पर मोमेंटम नहीं है. स्टिल द वीकनेस इज देयर एंड थोड़ा सा बाउंस. अगर किसी ने नीचे में बाय किया है तो आप बाउंस पे से बुक करते चले. अगर आपने ट्रेडिंग के पर्पस के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो आप होल्ड कर सकते हो. नीचे में इसका सपोर्ट में बात करूँ तो 110 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर द IRFC. वहां पर आप फ्रेश एंट्री के लिए बाय कर सकते हो. So since Madhur sir, आज हमारा Sensex expiry and we will have our Nifty expiry in this week, right? So Nifty 22,000 का put हम देख सकते हैं? Like it's a query for MHA. That Avinash, one stock on the radar for the BTST, that is a GICRE. Stock is up by nearly 4.26% with a stop loss of 369 for the upside target towards 390. काफी अच्छा इसमें मोमेंटम देखने मिला. Look at the hourly chart. Just a few minutes back, stock is up by 1.5%. काफी अच्छा and with a good volume as well. So one can focus on a GICRE for the BTST trade with a stop loss of 369 for the upside target towards 390, 392 level. Great. So guys, I would repeat once again a trade for you. हमने BTST initiate किया on GICRE, right? Currently 378 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, राइट? तो हमें ये बाय करना है करंट मार्केट प्राइस पे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 369. 369 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड द टारगेट विल बी 390. 390 का टारगेट रहेगा ऑन द अपसाइड. BTST on GICRE. Put 50, right? Yes, 22,000 put. तो उन्होंने बाय किया है या? So he's just asking for the view for the next day. Yeah. So निफ्टी की जैसे मैं बात करता हूँ तो जैसे the still the bias is slightly negative because bigger time frame अभी भी कोई रिवर्सल नहीं है निफ्टी के इसमें. But going with the naked put और naked call, उसमें डिके होने के ज्यादा चांसेस है. So अगर आपको व्यू लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से नीचे आ सकता है तो इट्स बेटर आप यहाँ पर बेयर पुट स्ट्रेटेजी इनिशिएट कर सकते हो, राइट? जैसे कि निफ्टी 22,000 के आसपास, 22,080 के आसपास ट्रेड हो रहा है.
तो आप यहाँ पर पुट बाय करके एट द सेम टाइम पुट सेल कर सकते हो नीचे का, सो दैट यहाँ पे आपका रिस्क हेज हो जाएगा. तो इट्स बेटर कि नेकेड के जाने से बेटर है कि आप स्ट्रेटेजी इनिशिएट करें. सूरज जी ने एक सही बात कहा है कि सेंसेक्स का कॉल का प्रीमियम कम हुआ है लेकिन पुट का प्रीमियम बढ़ा नहीं है. एग्जैक्टली राइट. सूरज जी, दैट इज द ओनली रीजन हमने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया. वी स्टिल ट्रैकिंग, यू नो, कोई स्ट्रेटेजी में वी कैन मेक इट. सो व्हाट इज योर व्यू ऑन एयरटेल, मधुर सर? सो भारती का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हुआ है, बट सपोर्ट से हर बार बाइंग देखने मिलती है. बट लास्ट फ्राइडे काफी बड़ा कैंडल बना है, 5% डाउन था स्टॉक उस दिन. एंड द प्रॉब्लम इज कि ये कैंडल शायद जल्दी सरपास ना हो, तो थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर वीक हुआ है. सो किसी को बाय करना है तो बेटर सपोर्ट के आसपास बाय करे. सो 1560 1550 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, हर बार वहां से एक बाइंग देखने मिलता है, तो वहां पर आप बाय कर सकते हो फॉर द अपसाइड टारगेट टुवर्ड्स 1640 लेवल. Great, Shivaji. I hope this answers your query on Airtel. What is the view on BHEL? सो अविनाश, बीएचएल की बात करें तो डिफेंस में काफी अच्छा एक्शन देखने मिला लास्ट 2 दिनों से. एंड स्टॉक ने यहाँ पे एक निगेशन के साथ, वॉल्यूम के साथ काफी अच्छा बाइंग देखने मिली है. सो वन कैन फोकस ऑन द बीएचएल. इवन एचएएल काफी अच्छा एक्शन है, इवन बीएल में भी काफी अच्छा एक्शन है. सो बीएचएल थोड़ा सा सपोर्ट पे आप बाय कर सकते हो. नीचे आया तो अगर इफ यू गेट अराउंड 185 187 तो वहां पे बेटर रिस्क रिवॉर्ड रहेगा. ऊपर में स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स 195 लेवल. Great. Ashwini Kumar ji, the question you have, do you want to have a detail or information about the candlesticks pattern? Ashwini ji, we are definitely going to hold this session in this week for the rest of the month. So please make sure you don't miss any of the session, right? Further details will be communicated to you very soon by tomorrow. सुरभि जी, हमने IRFC पे ऑलरेडी बात कर दिया, राइट? सो जस्ट वी विल क्विकली ऐड वन मोर टाइम ऑन इट. सो मधुर सर, अगर IRFC किसी को देखना है फॉर दिस वीक, व्हाट एग्जैक्टली इट शुड बी द द numbers and what exactly your view on it? राइट. अगेन बिकॉज द चार्ट इज वीक, इट्स बेटर कि थोड़ा सा डिप में बाय करें, और डिप में बाय करके जैसे कुछ मोमेंटम आता है तो एग्जिट करें. स्ट्रक्चर इज वीक बिकॉज लुक एट द वीकली चार्ट एज वेल, फॉर्मिंग अ लोअर टॉप लोअर बॉटम, एंड इवन ऑन द मंथली चार्ट एज वेल. मंथली में लास्ट मंथ स्टॉक वाज डाउन बाय 25%, वहां पे एक ब्रेकडाउन हमें देखने मिला. सो एज ऑफ नाउ कोई रिवर्सल साइन यहाँ पर नहीं है. किसी को शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए प्ले आउट करना है तो वन कैन बाय अराउंड 110 लेवल, और एक वहां से आपको 4 to 5 रुपीज का मोमेंटम देखने मिल सकता है. प्रवीण जी, we will definitely share futures idea for BTST और STBT. हमने एक शेयर कर दिया in the cash, right? If there will be anything in futures for BTST and STBT, then we will definitely share the same. I've seen some momentum in the Sensex put. It went from 45 to 60, 61, again back to 55. At the same time, call बहुत decay हुआ है. But the problem is कि जो momentum बहुत बड़ा होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है. 10 से 12 पॉइंट का स्विंग आया. So 10 से 12 पॉइंट के स्विंग के लिए एज ऑफ नाउ यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना समझ में नहीं आ रहा है. अगर कुछ थोड़ा सा मोमेंटम होता है तो विल डेफिनेटली गो विद द ट्रेड. Cool. So what is your view on Castrol? तो कैस्ट्रॉल में एक रेंज ब्रेकआउट हमें देखने मिला है, एंड स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ द ब्रेकआउट फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट. 224 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा यहाँ पर. अच्छा साइन है यहाँ पर बिकॉज स्टॉक इज होल्डिंग ऑन अपर लेवल्स. सो किसी को बाय करना है तो 224 के ऊपर आप बाय कर सकते हो. ऊपर में स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स 230 लेवल. अगर सपोर्ट की मैं बात करूँ तो 211 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. So Bajaj Auto futures sell है मेरा 75,000 SC. What is SC? So Hitesh ji, please specify it properly. Something typo error. Is it call or put? Please mention once again. We'll
take your query. So what is the view on LIC? Yeah, but before that, Avinash, I can share the view on the Bajaj Auto. काफी weak setup है. Stock is down by 7% in last 2 days. In last week, it was down by 7%. इसके जो monthly sales data था वो भी काफी खराब आया है. And that's why the stock is forming a lot of lower bottom and trading its 52-week low. So काफी weak setup है, right? इसका टॉप आउट हो गया था सितंबर में. स्टॉक वाज अराउंड 12,700 और वहां से ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट का फॉल इसमें आया है. सो सेल किया है आपने तो प्रॉफिट बुक करते चले, राइट. मल्टीपल अगर लॉट्स हो गए तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या तो आपका जो स्टॉप लॉस था ऊपर आपको उसमें ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस आप. Cool. मयूर जी, आपने अभी तक कोई ट्रेड इनिशिएट करने नहीं कहा है. सो मयूर जी हैव अ क्वेश्चंस, कैन बी बाय 73,000 पुट. पुट अगर आप मैं देखे तो 62 पे आसपास ट्रेड हो रहा था, वो 27 हो चुका है. और जो कॉल था 10 के आसपास आया था कॉल, वो 17 हुआ है. तो दोनों साइड मोमेंटम है, तो नेकेड तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से. अगर आपको करना है तो आप कॉल पुट दोनों साथ में कर सकते हो, राइट. कॉल का अगर मैं बात करूँ तो 20 के आसपास प्रीमियम चालू है और जो पुट हुए 25 के आसपास है. तो कंबाइंड प्रीमियम लगभग लगभग अगर बात करें तो 23 और ऊपर में 20, सो 43 के आसपास कंबाइंड प्रीमियम है. हमने जब सेशन चालू किया था तो कंबाइंड प्रीमियम 53-55 के आसपास था. तो कंबाइंड प्रीमियम तो डिके ही हुआ है, राइट. कॉल कॉल में थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर आया है. तो नेकेड मैं सलाह नहीं करूंगा बाय करने के लिए. किसी को बाय करना है तो आप एट द सेम टाइम कॉल और पुट दोनों कर सकते हो बाय. ग्रेट. आई होप मयूर जी दिस आंसर योर क्वेरी. अभी पुट डाउन गया. ओके, ठीक है. विल कंटिन्यूअसली ट्रैक द स्ट्राइक एंड वी विल डेफिनेटली अपडेट अगर हमारे साइड से कोई अगर ट्रेड सेटअप बन रहा है इन द स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट इज द व्यू ऑन एनएमडीसी? तो सेटअप वाइज काफी वीक है यहाँ पर. सपोर्ट के आसपास है बट मोमेंटम मिसिंग है स्टॉक में कंप्लीटली. सो 60 द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एंड व्हाइल द हर्डल्स आर सीन एट 65 लेवल. एक रेंज में काम होते हुए नजर आ रहा है. तो किसी ने बाय करना है तो 60 के आसपास बाय कर सकते हो. ऊपर में मोमेंटम जैसे मिले वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो. गोदरेज इंदू गोदरेज इंडस्ट्रीज में भी some typo error. right. So from last almost 3 to 6 trading session, stock is in a consolidation and trading in the range of almost 40-50 पॉइंट. यहाँ पे सेटअप वाइज काफी अच्छा लग रहा है, राइट. लास्ट वीक में काफी बड़ा ब्रेकआउट दिया था. स्टॉक वाज अप बाय 11% ऑन लास्ट फ्राइडे on 20th Feb. It was up by 17%. तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है. सो किसी को बाय करना तो डिप में बाय करे अराउंड 1060 के आसपास. ऊपर में स्टॉक कैन हेड टूवर्ड्स 1200 लेवल. What is the view on BSE? सो स्ट्रक्चर तो काफी वीक है. ऑलमोस्ट 20-25% फॉल हुआ है. आज एक कहीं ना कहीं इसमें फॉल में स्टॉप देखने मिला है. स्टॉप इसका जो 200 डेमा है वहां पे सपोर्ट लिया है, बट अगेन यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं लग रहा है. रिवर्सल जब होगा जब ये कल का या इसके परसों का कैंडल का हाई जब निकाले और उसके ऊपर क्लोजिंग हो, तब यहाँ कहीं ना कहीं रिवर्सल हो सकता है. स्टॉक जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट के आसपास है, वहां से आज घूमा है. लुक एट द वीकली चार्ट, काफी खराब है. लास्ट वीक स्टॉक वाज ऑलमोस्ट डाउन बाय 20%. आज भी गैप डाउन ओपन हुआ था बट नीचे के लेवल से बाइंग देखने मिला है 200 डेमा से. सो 4200 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन. वहां पर आप फ्रेश बाय कर सकते हो उसे, बट रिवर्सल नहीं है अभी भी. तो ऊपर में जैसे आपको बाउंस मिलता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो. So before I move ahead with more stock queries, so guys, we have rolled out yes. So guys, हमने दो पोल शेयर किया है, right, in the chat box section only. How you like our session, and what the second poll be, will you join again for the next session? So please make sure you go and vote out there, and we will continue with the stock queries parallelly as well.
So Madhu sir, what is your view on Chola Finance quantity 50 bought at 1510? Shola Finance का setup काफी अच्छा है. From last almost 2 weeks, we're suggesting to buy on the NBFCs. All the NBFCs का structure काफी अच्छा है. Look at the weekly chart, बहुत ही बढ़िया setup है यहाँ पर. Rounding bottom शायद बने पूरा तो it can head towards 1630 level in next couple of weeks maybe. डेली सेटअप में भी काफी अच्छा है. टुडे इज अप बाय 2.2%. सो किसी को बाय करना है तो वन कैन बाय. ऊपर में स्टडी आपको 1500-1550 के टारगेट्स में देखने मिलेंगे. एंड पोजिशनली जैसे मैंने बताया कि 1630 के टारगेट इसमें आ सकता है. Great. Guys, we are nearly good number of peoples out here attending the session. So, it will be really appreciated अगर आप जाके poll section में आपका feedback हमें दे. That from that we can definitely serve you better. कि हम और नई चीजें क्या कर सकते हैं, हम और क्या improve कर सकते हैं, right? So please make sure you don't forget to vote in the poll section. जो आपके chat के बाजू में ही आपको दिखता रहेगा poll, right? So everyone, please go and share your feedback out there as well. So, I guess we have already covered a lot of queries. So, Madhur sir, do we have any trade in, Sensex? It's almost अविनाश एंड बेटर जो कॉल पुट थे अभी भी उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है. सो आई डोंट वांट कि किसी का लॉस हो. सो बेटर है कोई ट्रेड हम इनिशिएट ना करें. Okay. And anything more trade in BTST or futures into STBT or BTST? एसटीबीटी तो नहीं समझ में आ रहा है. एज आई सेड कि बहुत ब्रॉडर मार्केट में काफी अच्छा हमने बाइंग देखने मिला है. तो बाउंस पे आप बेचना बेटर रहेगा रादर देन अभी सीएमबी पे बेचे. जैसे कुछ थोड़ा सा अगर बाउंस आता है तो बिकॉज ऑलमोस्ट मोर और लेस स्टॉक्स का जो स्ट्रक्चर है वीक ही है. आज बहुत सारे स्टॉक्स में बाउंस देखने मिला है. आप बाउंस पे बेच सकते हो. जैसे बट जैसे हमने इनिशिएट किया था कि सो वहां पर आप नजर रख सकते हो. Definitely, Venkataraman ji, you said very rightly. The main focus here is, कि हम profitable trades ही initiate करें rather than initiating any trade जहाँ पे probability of making profit will be like 50-50%. हम लोग कोशिश करते हैं कि profitable trade ही हम share करें. At least from there you will make a good handsome profit out there. So as of now, depending upon the market momentums and everything, कोई trade setup बन तो नहीं रहा है, right? And the same it has been communicated to you from Madhu sir himself, right? So I guess we have covered almost all the queries from our end. And Madhu sir, जैसे कि मैंने एक बार अभी आपको पहले ही कहा था कि राइट आपसे पूछा था कि निफ्टी का एक्सपायरी है, राइट, परसों. तो निफ्टी में ऐसा कोई हम स्ट्रेटेजी देख सकते हैं जो हम एक्सपायरी तक होल्ड कर सके? या अविनाश बेयर पुट स्प्रेड इनिशिएट कर सकते हो बिकॉज द व्यू इज स्टिल बेयरिश. सो वन कैन बाय द 21,100 put and one can sell 22,000 one can buy the 22,000 put and one can sell 21,900 put. तो यहाँ पर आप ये स्ट्रेटेजी पर नजर रख सकते हो. 22,000 का पुट बाय करके 21,900 का पुट आप सेल कर सकते हो. तो गाइस, जिन्हें भी निफ्टी में अगर ट्रेड करना है इन द स्ट्रेटेजी कंसीडरिंग कि हमारा एक्सपायरी होगा परसों, राइट, सो यू कैन डेफिनेटली initiate the trade in Nifty, the strategy bear put spread. So we are just putting it in the chat box. Madhu sir, it will be really appreciated अगर आप एक बार वापस ट्रेड हमें I'll just repeat once again. Bear put spread, buy Nifty 22,000 put and sell Nifty 21,900 put, right? Right. So what will be Perfect. the stop loss for it and what will be the upside we can expect from this trade? Just give me 1 minute. I'm checking the premiums. So 22,000 का जो पुट है वो अराउंड 60 के आसपास ट्रेड हो रहा है अभी. एंड 21,900 का जो पुट है, आई एम चेकिंग द प्रीमियम. आई एम हैविंग सम इंटरनेट इशू. एंड उसका जो अगर प्रीमियम है तो 32 के आसपास है. सो 20 पॉइंट का जो मेरा इसमें मैक्स लॉस है एंड 80 पॉइंट विल बी द मैक्स प्रॉफिट. 80 points, right?
Yes, 80 to 70 points is the max profit, and the max loss will be 20 to 30 point. सो गाइस, जो भी हमने बेयरपुट स्प्रेड आपको इनिशिएट करने कहा था, राइट, ऑन निफ्टी 22,000 पुट, it's currently trading near 60 and at 60 and sell nifty 21,900 put at 32. So combine इसका लॉस हो सकता है मैक्सिमम 20 to 30 पॉइंट्स, बट ऑन द अपसाइड हमें रिवॉर्ड इसका 70 से 80 पॉइंट्स का देखने मिल सकता है, राइट? Yes. So I guess you can definitely go and initiate the trade. Since हमारा परसों एक्सपायरी होगा इन निफ्टी, सो यहाँ पे से किसी भी एक डायरेक्शन में अगर हमें मोमेंटम देखने मिलता है तो यू कैन मेक अ हैंडसम प्रॉफिट फ्रॉम दिस ट्रेड, राइट? So I guess that's it, guys, from our end. Madhu sir, if you want to add anything more before we sum up the session. तो फोकस ऑन द निफ्टी लेवल्स, जैसे कि हम जो लेवल्स हमने शेयर किए उसी पे फोकस करें. द व्यू इज स्टिल द बेरिश, बिकॉज बिगर टाइम फ्रेम पे देखे तो निफ्टी का व्यू अभी भी कोई साइन नहीं है रिवर्सल का, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में. सो फोकस ऑन द लेवल्स एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली. Great. So guys, yes, just quickly sum up. So guys, हमने आज 2 BTST trade share किए, right? On GIS, one BTST trade on GIC RE. हमें 378 के लेवल पे बाय करना था, राइट? स्टॉप लॉस रहेगा 369 एंड टारगेट फॉर 390. दिस विल बी द BTST that we had shared. And repeating once again, the bear put spread on Nifty. कंबाइंड हमारा इसका प्रॉफिट रहेगा 70 से 80 पॉइंट का, मैक्सिमम लॉस रहेगा 20 से 30 पॉइंट का, राइट? और निफ्टी 22,000 का पुट आपको बाय करना है और सेल करना है निफ्टी का 21,900, 21,900 पुट आपको सेल करना है. सो यस, दैट्स इट गाइस फ्रॉम आवर एंड. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. थैंक यू सो मच मधु सर. Yeah, thank you.